Hello guys and welcome back to our YouTube channel. Our today's topic is testing and validation. The only way to know how well a model will generalize a new case to the actually try it out on a new cases. One way to do this is to put your model in production and monitor how well it performs. This is work well, but if your model is horribly bad, your user will complain. Not the best idea. The best option is to split your data into two sets, the training set and the testing set. After data cleaning and select the pure data this is our second step, testing and validation. As these names imply, you train your model using the training set and you test it using the test set. The error rate on new case is called the generalization error or out of sample error, and by evaluation your model on the test set you get the estimate of this error. This value tell you how well your model will perform on instance it has never seen before. If your training error is low, your model make a few mistakes on the training set, but the generalization error is high, it means that your model is overfitting the training data. This is a very important point. If your training error is low, or your model make a few mistakes on the training set, but the generalization error is high, it means that your model overfitting the training data. It is common to use 80% of data for training and hold out 20% of testing. However, this depends upon the size of the dataset. If it contains 10 million instances, then holding out 1% means your test set will contain 1 lakh instance. That probably more than enough to get the good estimate of the generalization error. Hyperparameter tuning and model selection. So evaluating a model in a simple enough. Just use a test set. Now suppose you are hesitating between two models, say a linear model and a polynomial model. How can you decide? One option is to train both and compare how well they generalize using the test set. Means आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप दो मॉडल्स के दरमियान कंफ्यूज हैं कि मैं इस पर कौन सा मॉडल लगाऊं, लीनियर मॉडल लगाऊं या पॉलीमॉर्फिज्म मॉडल लगाऊं, तो आप ये दोनों लगा के उनका जो सा रिजल्ट है उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो उनका स्कोर होता है उसको टेस्ट करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट है. मीन्स फॉर एग्जांपल लीनियर मॉडल की एक्यूरेसी आई है हमारे पास 89% और पोलिनोमियल मॉडल की हमारे पास एक्यूरेसी आई है 94-93%. तो ऑब्वियसली हम पोलिनोमियल मॉडल को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सा मॉडल लगाना है या कौन सा मॉडल इस पर ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देगा. तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है. अगर आप कंफ्यूज है 2 पे 3 पे जितने भी कंफ्यूज है आप वो सब इम्प्लीमेंट करके, अगर 4 पे भी आप कंफ्यूज है 4 भी लगाएं और उनका रिज़ल्ट आप कंपेयर करें. ग्राफ्स के थ्रू कर सकते हैं आप, डिफरेंट ग्राफ्स बना के कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब की मदद से, सीबोन की मदद से. तो इस तरह आप डिसाइड कर पाएंगे. नाउ सपोज देयर इज़ अ लीनियर मॉडल जनरलाइज बेटर बट यू वांट टू अप्लाई सम रेगुलेशन टू अवॉइड आउटफिटिंग. The question is, how do you choose the value of regularization hyperparameters? One option is to train 100 different models using one different value of the hyperparameter. Suppose you find the best hyperparameter